6 sixes to the shorter side, and then you roll that over and you've got more sixes to the shorter side, 4 sixes, and just one to the longer side. So it's not just about looking at the pitch, it's not water boundary. Pitch and weather brought to you by Olivia Fairness Cream. Olivia, shukriya. Thank you, Bazid. And we're still speculating about the pitch. हम मेरा ख्याल अपना ही ड्रोन चेक कर लेते हैं और मैंने तो कुछ समझ नहीं। I don't know, ICC कर रहा है या ये स्टार कर रहा है, पिच की बात ही नहीं कर रहे, बाउंड्रीज पे फैसिनेटेड हुए हैं। इतनी बाउंड्री इधर है, इतनी बाउंड्री इधर है, पिच दिखा दो भाई जिसपे हम बता सके लोगों को। हम अपना ड्रोन दिखा लेते हैं ना, ये रहा हमारा ड्रोन शॉट दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, इससे अंदाजा लेते हैं। ये रही पिच, वो ये तो ये पिच है। You guys are present, ये दरमियान में ये लाइट मार्क्स क्या हैं? एक्स्ट्रा मट्टी डाली है क्या है मिसबा? ये बीच में ये जो दाग लगे हुए हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैचेस होते हैं तो जो वो मार्क्स पड़ते हैं, कई दफा साइड वाली पिच जो अगले मैच के लिए होते हैं उस पर फील्डर दौड़ते हैं, तो वो उसकी वजह से जो मार्क्स उनको ये फिलअप करते हैं कई दफा। इतने ज्यादा मार्क्स ये तो बिल्कुल सीधे डाउन तो इसके ये दौड़ने वाले तो नहीं है, ये तो यूं है कि जैसे किसी ने इसके ऊपर खेला है, बॉलिंग की है, मुझे लगता है लेप किया हुआ है। दिस इज स्ट्रेन बिकॉज़ एडेड सॉइल डाल के उसको प्लेन करके तो उसके ऊपर रोलर चढ़ाया गया, उसको कोशिश की है कि जो थोड़ा सा आई थिंक ये यूज्ड पिच है क्योंकि फुट मार्क्स जो हैं वो फिल किए गए हैं। इट इज अ यूज्ड पिच। आई थिंक दिस इज द सेम पिच यूज्ड इन द लास्ट मैच। लेकिन वो बाउंड्रीज डिफरेंट दिखा रहे थे कि ये वो वाली पता नहीं शायद वही पिच है। बट ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट द बाउंड्रीज फॉर अ सेकंड। दिस इज अ वर्ल्ड कप गेम। एक तरफ 57 मीटर है, दूसरी तरफ 71 मीटर है। स्क्वायर ऑफ द विकेट, 73 मीटर दोनों टीमों के लिए है ना। नहीं बट वो तो हो गया, लेकिन मुस्लिम डोंट यू थिंक कि एक बॉलर के लिए एक साइड पे एडवांटेज है, दूसरे पे डिसएडवांटेज? अगेन फॉर द बोथ साइड्स, बट दैट्स व्हाट इट इज। अब वो ग्राउंड इतनी है उसको तो बड़ा कर नहीं सकते। दैट्स वेयर यू गोना गेट टेस्टेड, यू नो, एज अ कैप्टन आल्सो। और दूसरा ये है कि वेन्यू सिर्फ 3 है, क्या करेंगे आप? होते 3 वेन्यू है, 12 टीमें हैं, और फिर इससे पहले IPL भी हो हटा है, तो उस इन पिचेस पे इतनी क्रिकेट हो चुकी है। बड़ा कुछ मुझे जो मुसीबत जो मुझे डर है ना, इट इज दैट जब ये टूर्नामेंट सेकंड लेग में जाएगा, आगे जाएगा, तो ये कहाँ से लाएंगे फ्रेश पिचेस? तो इन्हीं पिचेस पे खेलना होगा, तो स्पिनर्स विल हैव अ बिगर से। ये जरा पिच के ये नजर डालते हैं कि कौन सी वाली पिच, अगर आप ये गौर से देखेंगे, ये बीच में वाली लग रही है। नहीं, ये सेंटर वाली है जो हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त। क्योंकि इसमें आप देखें दोनों तरफ आप बाउंड्रीज के देख सकते हैं, साइजेस जो है वो क्या है। That doesn't make any sense. 57 meters and 73 meters. So it's more to the left. It looks like a center pitch. That doesn't make any sense. I think ये ग्राफिक्स गलत बनाए हैं इन्होंने, क्योंकि ये पिच है एक साइड की। This is not definitely not a center pitch. यहाँ से सेंटर लग रही थी, बट जो आपको बाउंड्री की वो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं उसमें सेंटर नहीं। 20 मीटर का फर्क है, बिल्कुल 20 मीटर का फर्क है। अगर आप पवेलियन एंड से देखें, ये शारजा में जैसे आप एंटर होते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे सेकंड पिच थी जो प्रीवियस मैच हुआ। सो ऑब्वियसली ऑन दैट साइड लेग्स, जो पवेलियन एंड पे अगर आप बैटिंग करें तो लेग साइड की बाउंड्री छोटी। ये देखें आप, ये आपको नजर आ रही है वाज़ेह तौर पे। अभी दूसरे एंड से दिखा रहे हैं। Maybe it's a little bit smaller. So pavilion end is this side. Yeah. Okay. कुछ समझ नहीं आई। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। So we can't explain. Sorry guys. It is pretty confusing. Well, looks like जैसे नबी ने भी बात की कि बहुत ड्राई लग रही है, जो यहाँ से नजर भी आ रहा था पिच बहुत ड्राई। पिछले मैच में भी ड्राई लग रही थी, बस बॉल स्पिन नहीं हुआ। पिछला डे गेम था। अब ये इस गेम में क्या होगा, जो टीम पहले बॉलिंग करेगी, सेकंड टाइम पे अगर ओस पड़ेगी तो पिच अच्छी हो जाएगी। थोड़ी सी ओस से क्या होता है, मिट्टी जुड़ जाती है। राइट, जब मिट्टी जुड़ जाती है और सेकंड इनिंग से पहले रोल जो लाइट लेना है या हैवी लेना है, वो बैटिंग टीम पर डिपेंड करता है। लाइट भी लेंगे तो ये अच्छी बल्ले पे गेंद आना शुरू हो जाएगा। स्पॉट्स का क्या करेंगे? ये इतना जो उनको ऐसे लग रहा है जैसे पिच बीमार स्पॉट्स लग रहा है कि सेपरेट है पिच से। दैट कैन इट शुड नॉट बी लाइक दैट। नॉर्मली पिच में जो कलर है वो एक जैसा होना चाहिए। ये जो डिफरेंट पैचेस हैं, ये समझ से बाहर है फॉर वर्ल्ड कप गेम।
बिल्कुल ऐसे ही है फॉर वर्ल्ड कप गेम. आई थिंक दैट इज द थिंग. हमारे पास इस वक्त रिच बैरिंगटन मौजूद है. आइए सुनते हैं. Well, Richie Barrington is a name that's been synonymous with Scotland cricket for many years. Richie, you're still going strong. You're getting runs. Tell us about that win over Bangladesh that started this World Cup campaign for Scotland. Yeah, I don't think for us we could have asked for a better start, really. I think we went into that game with a lot of belief, but we knew we were going to have to play some really good cricket to beat a team like Bangladesh. Obviously, they've got some world-class players, but we've certainly taken a lot of confidence from that performance, and I feel like since then we've kept building on it. You're getting runs, the boys are getting wickets. It seems like a great collective contribution here from Scotland. Yeah, I think that's one of the exciting things about this squad is the depth we have. With all the different skill sets as well. There's been different guys putting their hands up throughout the tournament. We saw that in the first game as well with Chris Greaves and Mark Watt and that incredible partnership they had. And the bowlers as well have been fantastic, particularly in the death overs. Now this is a step up. This is Super 12. This is Afghanistan. Scotland have never beaten Afghanistan. How much have you been looking at their side, or have you been just concentrating on what Scotland can do? Yeah, a bit of both really. Obviously we do look at their team and kind of how they line up and stuff. We know they've got some really dangerous players and some quality players. But I think for us it's really just trying to keep believing in ourselves, keep doing a lot of the stuff we have been doing. And I think for us we just want to keep getting better and see if we can continue that momentum from the first stage of the World Cup. Enjoy it. Enjoy the night, Richie. Thanks very much. रिची बैरिंगटन देयर, बड़े क्रिटिकल प्लेयर, बड़े क्रूशल बैट्समैन है ये स्कॉटलैंड के लिए. बड़ी परफॉर्मेंस रही है. पापा न्यू गिनी के खिलाफ 70 रन किए थे इन्होंने मेजबान. हाउ इंपॉर्टेंट इज ही गोइंग टू बी टुनाइट फॉर स्कॉटलैंड? आई थिंक इन फॉर्म, कॉन्फिडेंट, द वे ही इज बैटिंग, हर मैच में ऑलमोस्ट रन्स कर रहे हैं. इम्पोर्टेंट गेम है उनके लिए, और जैसे आपने सुना कि नेवर वन अगेंस्ट अफगानिस्तान, सो दे विल बी अंडर प्रेशर, स्पेशली इन कंडीशंस में खेल रहे हैं. बट ओवरऑल रिकॉर्ड इज वेरी गुड. 33 की एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट. इज अ कंसिस्टेंट बैट्समैन, और जैसे आप देख रहे हैं द वे ही बैटेड इन द प्रीवियस गेम, सो ही विल बी द की. He will be the key there. Also, we have to give credit to the Scotland batting Wahab, क्योंकि जो मैच बांग्लादेश के साथ था, they had a shaky start and then they steadied themselves to pose that total, and then they defended that total. So the team has temperament. See, they have played very good cricket. जिसकी हमने बात की, और as a team, it always matter कि as a team, not as an individual, because इंडिविजुअली आप परफॉर्म जरूर करते हैं, लेकिन जब एज अ टीम आप परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आते हैं, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी होती है. कोई ना कोई प्लेयर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिप इन करता है, जिसकी वजह से जो टीम है वो अच्छा करती है. और वही हमने देखा कि बांग्लादेश के मैच में जो ग्रीव्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी पहले तो बैटिंग की आके. एक टाइम पर तो ऐसे लग रहा था मैच बिल्कुल हार गए हैं, लेकिन उसके बाद उसने वो बैटिंग की, वो एक छोटा सा कैमियो खेला, और उसकी वजह से जो बांग्लादेश की टीम थी वो थोड़ी सी प्रेशर आई. फिर जैसा वसीम भाई ने कहा कि जो उनके फास्ट बॉलर स्पेशली डेवी, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करा है. ही इज अमंग द विकेट्स, आई थिंक इज हाईएस्ट विकेट टेकर राइट नाउ. जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, एंड accompanied by the left arm spinners and the other pacers, so they have a very good team, a team to look forward. Obviously it's not going to be easy to play against Afghanistan, but it will be a good game. बिल्कुल ऐसे ही है. For Scotland, how should they go about their business tonight? Because again, अफगानिस्तान को क्लियर कट एडवांटेज है शारजा का, यूएई का, और स्कॉटलैंड ने दिखाया है कि they can handle the spin of Bangladesh, of Oman, and they can deliver the goods. I mean, वो कहते हैं ना कि प्ले द बॉल, नॉट द बॉलर. Yes. अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे राशिद खान बॉल कर रहा है या नबी बॉल कर रहा है या XYZ बॉल कर रहा है, फिर आप नहीं खेल सकते. विच दे हैव प्रूव्ड कि जी जब इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला, जब इन्होंने बाकी मैचेस खेले, तो दे वर वेरी एग्रेसिव. अपनी जो उनकी गेम है उसी तरीके से खेले. तो सी द बॉल एंड प्ले अकॉर्डिंगली and don't think about it, just enjoy the moment, which I think they will, क्योंकि अपनी जो उनकी सोच थी कि कहाँ तक जाना है, उससे वो आगे आ चुके हैं. and if they beat one of big teams, big boys, और क्या चाहिए. I think इन्होंने थोड़ी सी प्लानिंग तो की होगी कि राशिद और मुजीब को खेलना आसान नहीं होगा इनके लिए, बिकॉज दे आर मिस्ट्री काइंड ऑफ स्पिनर्स. राशिद इसलिए मुश्किल है कि उसका जो लेग ब्रेक और गुगली है वो इतना तेज बाजू घुमाता है कि वो
नजर नहीं आती, लूप नहीं है, ज्यादा फ्लैट करता है. सो अब ये उन 8 ओवरों में इन्होंने विकेटें नहीं देनी. आई सपोज दैट शुड बी देयर प्लान. डिफिकल्ट टू. वसीम भाई, राशिद की जो एक अच्छी चीज है कि राशिद को बहुत आइडिया है, वो आपको करीब बॉल नहीं करता. वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है और वो इतनी पेस पे बॉल करता है, स्किट करता है उसका बॉल, स्पेशली जो गुगली भी करता है. बैकफुट पे आप जाके आपके पास टाइम नहीं होता और आप यू कैन नॉट गेट अंडर द बॉल बिकॉज ऑफ हिज लेंथ. बड़ी पक्की लेंथ है उसकी. और दूसरी चीज शारजा में एक चीज और है कि शारजा यू नीड पावर बैट्समैन, क्योंकि इतने आराम से चौके नहीं लगते, हैवी आउटफील्ड है. तो जितने भी टीमें हैं अफगानिस्तान को ये वैसे भी शूट करे, उनके पास जितने बैट्समैन हैं वो बड़ी शॉटें मारते हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे चौके मारना इतना आसान नहीं है. अगर बड़ी शॉट है, छक्के मारने वाले प्लेयर आपके पास हैं तो you get value for those shots. Yeah, you do, and that outfield is critical because that also makes a whole lot of difference when you're batting and you can't get the ball through to the boundary. शारजा की बाउंड्रीज जमीन है तो छोटी, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी स्लो होती है कभी, सो दैट माइट कम इनटू प्ले. सिर्फ और सिर्फ देखना ये है कि ड्यू फैक्टर आता है या नहीं आता है. जब ड्यू नहीं आती है तो बैटिंग बहुत आसान होती है. बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि देन बॉल स्टार्ट ग्रिपिंग. So it's for both teams. The boundaries are for both teams. So all the Quickly best. win the toss and do what? Have a wild guess. You say I take you now to the Sharjah Cricket Stadium where Wilco is ready with both the captains for the toss. Toss brought to you by Shanshu. Trust a must है. And चिली मिली हर पाकिस्तानी की जान में मिली. Former New Zealand Test captain Jeff Crow is our ICC match referee. Calcutta, captain of Scotland, and Mohammed Nabi, captain of Afghanistan. Mohammed, you've got the coin. Would you like to give it a flick? Heads call. Tails, Afghanistan. So Afghanistan have won the toss. That's gone down well with your home fans here. Mohammed, you've won the toss. What are you going to do, and tell me the reason for it? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, we will bat first. The wicket is dry and good for the batting, and we'll try to put some score on the board. Yeah. So batting first. You've had a couple of good warm-up games. You're itching to get going tonight. Yeah, it's first game is not that much good for the next game against Western is a really good game. With the conditions and the way a lot of the IPL games went, chasing a score down was successful. You had that wonderful week in Oman. 4 days ago you qualified for the Super 12. What have you been doing in those 4 days? Yeah, I think first of all the boys got a chance to enjoy themselves and just take in what we managed to achieve. And in our minds still though. We believed that we could make it through that group stage, so we've still got a point to prove, really. But we're also very privileged to find ourselves in this position. So we'll be, fighting for the cause of associates in this competition. Well, we saw a very settled Scotland team. I think you only made the one change for the one game. Have you made changes because of the nature of this pitch here in Sharjah? No is the answer. We haven't made any changes. The team has been performing extremely well. We have strengths and depth in players that aren't in the lineup at the moment, and I'm sure they will feature at some stage. But at the moment, we were comfortable with the team we had. Scotland in the Super 12. You enjoy yourself, Carl. Thank you. Thanks very much indeed. All right, that's the news from the middle here. Mohammed Nabi has won the toss, and Afghanistan are going to bat.
Toss brought to you by Shanshu. Trust the must है. And Chili Milli, हर पाकिस्तानी की जान में मिली. Thank you, Wilco. And the news out of Sharjah, अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. And the Scottish captain is also happy. Afghan captain is also happy. What's going on here? What do you think about that decision? Misbah, let's start with you. मुझे लगता है कि strange decision है, especially having so many spinners in your side. Probably थोड़ा सा ड्राई बॉल के साथ अगर वो करते तो ज़्यादा उनको एडवांटेज होता, बट आई थिंक अंडर प्रेशर वो चेज नहीं करना चाहते, बैटिंग नहीं करना चाहते. दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन देयर बॉलिंग लाइनअप, रन्स ऑन द बोर्ड एंड डिफेंडिंग. Yeah. So you comfortable with that decision of Afghanistan, Waqar? Yeah, I think so. Why? I think the reason is very simple. I mean, they've got a very strong bowling lineup. उनके spinners इतने तगड़े हैं, even थोड़ा बहुत ड्यू भी पड़ेगी तो I don't think they will have much of an issue. हाँ, अगर वो रन्स अप करना ये that is more important. अगर रन वो कोशिश करेंगे कि इतने रन कर दें कि अगर कहीं ड्यू शू अगर आती है तो वो थोड़ा सा एज उनको मिल जाए. Generally, Afghanistan batsmen have a tendency, Wasim, they go in with the charge. They really go out there and they are on the attack right from the word go. opener MS और Hazratullah Zazai, they will go all guns blazing. They're not going to stop in first 6 overs. They will attack every ball, so they can actually put pressure. Because Scotland के पास medium paces हैं. नंबर 3 पे शायद गुरबाज हो सकता है खेले, तो वो भी ऐसे ही खेलता है. I don't know. So that's what their strength is. वो रुकते नहीं हैं. They don't believe in rotating the strike. They believe in go big, rotating the sixes. Go big or go home. Yeah, go big or go home. And with that, we will go into a break. We'll see you on the other side right here on A Sports and 10 Sports. Keep watching the Pavilion. Olivia Fairness Cream, जिसकी ट्रिपल फेयरनेस थेरेपी स्किन डैमेजेस से बचाए, सिर्फ 10 दिन में फर्क नजर आए. ओलिविया, शुक्रिया. सब्ज रंग छा गया, मंजिल तक पहुंचा गया. Now available online. Pakistan Cables, trusted, not to compromise. Try the new taste. Very nice. Pepsi. Very nice. तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, तपाल दानेदार. छोटा मुंह पर नहीं है तो कुछ में भी है तुम जैसा ये खाता क्या है? टाइगर एनर्जी बिस्किट्स, जो दे 20% आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत. नया 10 वाला टाइगर जो दे एनर्जी का डबल डोज. का मुनाफा. नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, बेहतरीन मुनाफा, बेहतरीन मुस्तकबिल. जुबली इंश्योरेंस के एजुकेशन प्लान्स में आपके लिए है हर मुमकिन सहूलत, जरूरत के मुताबिक प्लान्स और इजी पॉलिसी मैनेजमेंट. जुबली इंश्योरेंस. Okay, thank you. अब तो मेरे दिल की बात कर दी है आपने. Okay, thank you.
रज़ई और जो शहजाद हैं वो उनके ओपनर्स हैं। उसके बाद जो है वो गुरबाज हैं, वो भी बहुत अच्छी अटैकिंग बैटिंग करते हैं। अफगान जो है वो असगर अफगान, नबी, नजीब, गुलबदीन, ऑलराउंडर, राशिद नवीन और मजीद। सो दे हैव गॉन विद लाइक क्या कहते हैं, दो पेसर्स के साथ हो गए, जिसमें गुलबदीन और जन्नत जो है वो जो है उनको साथ मीडियम पेसर एज एन ऑलराउंडर्स हैं। और नबी जो है फास्ट बॉलर। अदरवाइज हमने स्पिनर में देखा है राशिद है, नबी हिमसेल्फ और मुजीब। सो इट्स अ गुड टीम, गुड कॉम्बिनेशन। उनकी बैटिंग जो है वो भी टिल द डेप्थ 8 टिल जन्नत। सो इट्स लुक्स गुड। इवन के राशिद कम्स एट 9 एज वेल। सो अच्छी बैटिंग लगता है। Thank you, Wahab. Thank you, Wahab. Let's take a look at the Scotland team now on your screens. ये सूरत हाल है। बकार भाई, why don't you take us through this? The Scottish team. They have, as you all know that, they have all qualified for the next round and they've been playing really, really good cricket. Same team, I mean, they've got the batters are in form, अच्छी form में भी हैं. The only thing maybe they struggle, Sharif bowled really well. The only thing they might struggle is spin. अगर spin हुआ तो इनके पास वो quality spinners की नहीं है जो कि अफगान के पास है. So it will be a match up, but I still feel कि अफगानिस्तान के पास power house उनके पास spinners ज़्यादा बेहतर हैं. Somehow I feel that Scotland have a very good plan for things, team by team, because the way they took apart Bangladesh in that game and then how they handled Oman and Papua New Guinea, it seemed very clearly that they, for every team, they have a very, very good plan. No doubt they performed beautifully in the qualifiers. That was a big upset for Bangladesh, उनसे जीतना, but this is a different ball game. अफगानिस्तान की टीम बड़े बड़े मैचेस खेल चुकी है ओवर द इयर्स. दे क्वाइट एक्सपीरियंस T20 फॉर्मेट. इनके क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स दे प्ले लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर प्राइज पोजेशंस आई सपोज इफ यू इन लीग क्रिकेट. सो इनको पूरा एक्सपीरियंस है. मगर जो जैसा कि मिसबा ने कहा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा जब उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की. प्रॉब्ली मिसबा इज राइट के शायद वो चेस करना इतना पसंद नहीं करते कि इतने अग्रेसिव तरह से बैटिंग करते हैं. रन्स ऑन द बोर्ड, बॉलिंग में बैटिंग बॉलिंग में क्या देखता है कप्तान? देखते टीम ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या. आपकी अगर स्ट्रेंथ बैटिंग है तो आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो आप मोस्टली डिफेंड करते हो. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे डिड. Absolutely. Scottish fast bowlers, स्कॉटलैंड की जो टीम के बॉलर्स हैं, they bowl that particular line and length जो हम देखते हैं काउंटी क्रिकेट में. They like to pitch the ball up, swing the ball. और अगर ये जायज़े वगैरह के कहीं आर्क में आ गई तो बहुत बड़ी बड़ी शॉटें मारेंगे. बिल्कुल. ये तो आपके पास फिर चांस है, लेकिन आई थिंक शारजा को देखते हुए वो जो उनकी लेंथ है वो वहाँ पे इफेक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि ये स्किड करता है, विकेटों को हिट करता है. तो आई थिंक दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स आल्सो. बस जज़ाई से ये कट पुल ना खाए. हाँ, ही इज सो लीथल इस पे और इधर, और फिर आगे को भी वो सीधा मारता है. With that, थोड़ा फंसता है. Absolutely. With that, दोस्तों, हम आपसे कुछ देर बाद, कुछ लम्हों बाद आपको लेकर चलेंगे शारजाह, जहां अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेंगे और देखते हैं किस किस्म का टोटल लगाते हैं. आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी मैच के बाद. देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप. ICC Men's T20 World Cup, hitting your screen daily on A Sports and 10 Sports. नया 10 वाला टाइगर जो दे एनर्जी का डबल डोज. Tiger Energy Biscuits, Energy भरा डोज हर रोज. Jubilee Health Insurance Plans, 400 plus hospitals का नेटवर्क, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ इंश्योरेंस ऐप, जिससे कीजिए सब एक क्लिक पे. Jubilee Insurance,
बेफिक्र मुस्तकबिल। बैंक अल्फला पेश करता है सेविंग्स अकाउंट्स पे बेहतरीन मुनाफा जो आपके आज और कल को रखे। बिल्कुल आजाद। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। जब सॉफ्ट स्मूथ बटर थिक लशियस कैरमल में मिले, नो वंडर कैंडीलैंड बटर स्कॉच का मजा नॉन स्टॉप चले। 2 रुपए में इतना मजा, कैंडीलैंड बटर स्कॉच चलती जाए। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, टपाल दानेदार। सब्ज रंग छा गया, मंजिल तक पहुंचा गया. Now available online. Pakistan Cables, trusted, not compromised. New refreshing taste. Pepsi. शान से मिले बोरबे का असल रिवायती जायका। शान, खुशियाँ चख लो। चाय चाहिए कौन सी जनाब से, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए, लिप्टन ही तो है। New refreshing taste. Pepsi. नया 10 वाला टाइगर जो दे एनर्जी का डबल डोज। Tiger Energy Biscuits. Energy भरा डोज हर रोज। My home, my stage, my paint. Berger Paints, trusted worldwide. नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो दें $US पर 7% और पाकिस्तानी रुपए पर 11% तक का मुनाफा। आज ही लें अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, बेहतरीन मुनाफा, बेहतरीन मुस्तकबिल। Try the new taste. Pepsi. तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, टपाल दानेदार। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो दें $US पर 7% और पाकिस्तानी रुपए पर 11% तक का मुनाफा। आज ही ले अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, बेहतरीन मुनाफा, बेहतरीन मुस्तकबिल। Jubilee Health Insurance Plans, 400 plus hospitals का नेटवर्क, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ इंश्योरेंस ऐप, जिससे कीजिए सब एक क्लिक पे। Jubilee Insurance, बेफिक्र मुस्तकबिल। चाय चाहिए कौन सी जनाब से, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए, लिप्टन ही तो है। My home, my stage, my paint. Berger Paints, trusted worldwide.